Let us see the next question. TN Limited has rupees 600 lakhs, 10% bonds outstanding. Highlight the portion with 5 years remaining. So the remaining time period is 5 years. Since interest rate is falling, TL Limited is planning for of refunding these bonds with 600 lakhs issue of 5 years bond carrying coupon rate of 7%. अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, नए डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7%. Issue cost of the new bond will be 12 lakhs and call premium is 3%. तो नए सिक्योरिटी का इश्यू कॉस्ट दे रखा है 12 लाख रुपए और एग्जिस्टिंग वाले जो बॉन्ड है उसको रिडीम करेंगे तो उसमें हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 3%. Rupees 18 lakhs being unamortized portion of the issue cost of the old bond can be written off. तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट से व्हाट इज द अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड with respect to the flotation cost. Income tax rate is 30%. You are required to calculate the bond refunding decision. You are required to analyze bond refunding decision. Present value factor at 7% and 4.9% for 5 years are as follows. तो 7% का फैक्टर से रखा है और 4.9% का फैक्टर से रखा है क्वेश्चन. I request all of you to go through the question, please. Heading right down. Adopting incremental approach. For decision making. In that, working note number 1, calculation of year 0 cash outflow. I request you to put answer in the chat box कि year 0 का cash outflow क्या होगा. Let us have understanding that's how to make the calculation. Particulars amount. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड. यानी जो नए बॉन्ड्स इश्यू करेंगे that will be an amount of rupees say 600 lakhs. ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्लैरिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है that it is planning of refunding these bonds with 600 lakhs new issue of 5 years bond. नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है उसको रिडीम करने के लिए ही हम लोग नया बॉन्ड इश्यू करेंगे. I request you to write down answer along with me. The redemption of existing bond an amount of 600 lakhs once again. फिर हमको प्रीमियम दे रखा है इट इज 3%. Premium is 600 lakhs into 3%. That comes to an amount of 18 lakhs. देखो यहाँ पे हमको दे रखा है कॉल प्रीमियम. It is 3%. उसके बाद we will have tax savings on premium. ये जो 18 लाख का हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमको 3% दैट इज 30% से टैक्स सेविंग मिलेगा.
क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स है उनसे हमारा रिलेशनशिप कट हो रहा है. सो वट एवर द प्रीमियम दैट वी पे टू देम, उसका टैक्स सेविंग हमको इमीडिएटली मिलेगा. दैट इज 5,40,000. फिर क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इश्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 12 lakhs. So we understand that's a kind of flotation cost, issue cost of new bond. So issue cost of the new bond is provided to us is an amount of 12 lakhs. उसके बाद जो अनअमोटाइज बैलेंस है एग्जिस्टिंग बॉन्ड का, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 18 lakhs. बहुत अच्छा क्लैरिटी दे रखा क्वेश्चन में. इट कैन बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. So we will have tax saving on unamortized balance of existing bond. It is 18 lakhs into 0.3. That comes to 5,40,000. ऐसा होगा. As a student, you may have a point. Let's say क्या हम लोग ये दोनों नहीं लिखेंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. So we will be having the cash flows to be found like this. It is 18 lakhs outflow, that is premium, plus 5.4 उसका tax saving, issue cost minus 12, and tax saving on unamortized balance 5.4. So the year zero cash outflow will be 19,20,000. So this is what we understand is initial cash outflow. Please take down this working. Next, working note number 2, calculation of recurring cash flow. उसमें हमको सिर्फ फर्स्ट ईयर का बनाना है क्योंकि बाकी सब ईयर्स में सेम रहेगा. I want you to write in the chat box what is the recurring cash flow only for the first year. So friends, we'll start working with like this. We will have savings of interest. I request all of you to write down answer along with me. 600 lakhs का बॉन्ड है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी का 10% है, फिर 7% हो जाएगा. So it is 600 lakhs into 3%. That comes to an amount of 18 lakhs. Then friends, we have been provided with the information that से जो नया बॉन्ड है उसका इश्यू कॉस्ट कितना होगा, एन अमाउंट ऑफ 12 lakhs, और जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसका अनअमोटाइज्ड बैलेंस कितना होगा, से एन अमाउंट ऑफ 18 lakhs. So we will be having say the savings of amortization of flotation cost. We understand that over here it is 12 lakhs divided by 4, 12 lakhs divided by 5. इतना हम लोग राइट ऑफ करेंगे. पहले क्या होता था 18 lakhs upon 5, इतना हम लोग राइट ऑफ करते थे. यानी क्या होगा, अभी हमारा राइट ऑफ पहले से कम हो जाएगा. सो 12 डिवाइडेड बाय 5 दैट कम्स टू 2,40,000. 18 divided by 5 that is 3,60,000. So we understand that it is 2.4 minus 3.6. So there is a savings of 1,20,000.
अच्छा, उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अ काइंड ऑफ सेविंग्स बिफोर टैक्सेस, that is 18 lakhs plus 1 lakh 20,000. It is 19 lakh 20,000. Income tax rate is only 30 percentage. So savings after taxes is 70 percentage. It is 13 lakh 44,000. क्या करेंगे? लेस सेविंग्स ऑफ एनुअल फ्लोटेशन कॉस्ट अमोर्टाइजेशन एन अमाउंट ऑफ 1,20,000, क्योंकि वो जो सेविंग्स है ना फ्रेंड्स, वो क्या है? नॉन कैश है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा. सो द आंसर वुड बी 12,24,000. दैट इज द वे इट इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड. सी फ्रेंड्स, लॉजिकली हम लोग ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये जो 18 lakhs का सेविंग्स है, that is supposed to be converted into post tax term. So what will happen? It is 18 lakhs into 1 minus 0.3. So over here it is 18 lakhs into 1 minus 0.3. इन ये सेविंग्स को हमने क्या किया? पोस्ट टैक्स किया. So it is 18 lakhs into 0.7. That comes to 12,60,000. Minus, we understand that say 12 lakhs divided by, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 2,40,000 हम लोग राइट ऑफ कर पाएंगे. पहले 3,60,000 दैट इज 60,000 कर पाते थे. यानी क्या हुआ? 1,20,000 रुपये हम लोग कम राइट ऑफ करेंगे. तो उसका जो टैक्स सेविंग का फायदा हमको मिल रहा, दैट इज मिलता था पहले, वो नहीं मिलेगा. सो माइनस हम लोग लिख सकते हैं 1,20,000 इंटू 0.3, दैट कम्स टू 36,000. सो 12,60,000 माइनस 36,000. ऐसा करके भी आप ये 12,24,000 का कैलकुलेशन कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक डाउन आंसर. Now after making this two calculation of NPV of the project, that is NPV of the project means NPV of debt rescheduling. I request you to make the calculation of the NPV of the debt rescheduling and put your answer in the chat box. So friends, over here, let us see that say whether the question is providing any information about the discounting factor, क्योंकि NPV के लिए क्या हमको discounting factor का information चाहिए. तो क्वेश्चन में हमको कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट से व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमेशा याद रखने का दैट से दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज जब हम लोग कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने का बात कर रहे हैं. दिस इज यूजफुल. देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? प्री टैक्स होता है, और ये कैश फ्लोस क्या है? पोस्ट टैक्स है. इसलिए क्या किया जाएगा? यूजिंग दिस इनकम टैक्स रेट इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट will make the cap, that is rate of interest post tax, and that will be used for the purpose of discounting. So I request all of you to take down answer along with me. Working note number 1, calculation of KD NPV फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा ROI rate of interest into 1 minus tax rate. Rate of interest is 7% into 1 minus 0.3. So it is 7% into 0.7. So the answer would be 4.9%. अच्छा, उसके बाद हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज कैश फ्लो, थर्ड कॉलम इज कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग 4.9%,
और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। ईयर जीरो का कैश फ्लो लिखो, या तो फिर हम लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट माइनस भी कर सकते हैं। उसके बाद ईयर 1 टू ईयर 5, सिंपल। ओके, ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो का वर्किंग नोट हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। इट इज एन अमाउंट ऑफ 19,20,000, दैट इज ईयर जीरो कैश आउटफ्लो 19,20,000. It is subject to discounting factor 1, 19,20,000. रिकरिंग कैश फ्लो कितना है? 12,24,000. इंडिविजुअल फैक्टर का जो इंफॉर्मेशन दे रखा है से उसका कोई यूज नहीं है, क्यूमुलेटिव फैक्टर का ही इस्तेमाल है। और 7% का तो फैक्टर हमको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने को दे रखा है। हमको क्या करने का है? सिर्फ और सिर्फ 4.9% को ही फोकस करने का है, दैट इज 4.341. दैट इज व्हाट्स द फैक्टर 4.341. So I request all of you to use a calculator. 12,24,000 into 4.341. So the answer is 53,13,384. उसके बेसिस पे हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। एनपीवी इज 33,93,384. ऐसा करके एनपीवी का कैलकुलेशन होगा। एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो हमको डेट रीशेड्यूलिंग करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा हम लोग डिसीजन लेंगे। सो राइट डाउन फाइनल आंसर। TN Limited is advised to reschedule debt finance. That is the way, so the decision is supposed to be given. Let us have further understanding. The question is of course over at this point of time. Just मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट वर्किंग नोट में ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो फॉर द इंक्रीमेंटल अप्रोच, जिसमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमको टैक्स सेविंग मिलेगा, फिर इश्यू कॉस्ट नए बॉन्ड का, और एग्जिस्टिंग जो बैलेंस है उसको राइट ऑफ करेंगे, और उसकी वजह से विल हैव द टैक्स सेविंग। तो ये ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो हो गया। रिकरिंग कैश फ्लो में हमको सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट के अमोर्टाइजेशन का खर्चा कम हो रहा है तो सेविंग्स वैसे कैश इनफ्लो है, सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस, सेविंग्स बिफोर टैक्स उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट किया, पर ये जो बिफोर टैक्स है दैट इज से ये जो सेविंग्स है वो नॉन कैश है, इसलिए उसको क्या किया? डिडक्ट किया। एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ रिकरिंग कैश फ्लो। उसके बाद एनपीवी, उसके लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग कैलकुलेट करेंगे, एंड देन से इट विल बी से डिस्काउंटेड विद द 4.9%, और उसके ऊपर से हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव इसलिए हमने हाँ बोल दिया कि आपको करना चाहिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए आई एम राइटिंग समथिंग मोर ओवर हियर।